सो लेट्स एनालाइज सेंसेक्स फॉर टुमारो। तो आज देखेंगे तो डेली पे प्राइस हैज क्लोज्ड अ सॉलिड ग्रीन कैंडल इवन आफ्टर गैप डाउन ओपनिंग। यहाँ पे पैनिक नहीं आया एंड प्राइस मूव्ड हायर, सो दिस इज अ बुलिश साइन कि इवन आफ्टर गैप डाउन द बायर्स आर सीइंग दिस प्राइसेस lucrative एंड दे आर पुशिंग द प्राइस हायर। सो 15 मिनट्स पे देखेंगे तो ऑन फ्राइडे प्राइस ओपन गैप अप और यहाँ पे इट कंसोलिडेटेड, सो द पार्टिसिपेंट्स एक्सेप्टेड दीज वैल्यूज। और आज गैप डाउन ओपन होने के बाद इफ द सेलर्स हैड टू कम दे वुड हैव कम इन फास्ट और प्राइस को नीचे पुश कर दिया रहता, बट even after a big gap down price moved higher into these acceptable values और यहाँ पे consolidate करना चालू किया है प्राइस ने। so basically the market participants are accepting these values, उसकी वजह से the price moved higher into this level and now further up move can be seen. So our bias for tomorrow will be towards buying side, but another observation I have कि जब भी प्राइस एक upside momentum में रहता है it most of the time opens gap up and it goes sideways, again it opens gap up and goes sideways. So intraday level पे you don't get much big targets और scalping targets मिलते हैं, so that can be case for tomorrow. So in a bullish market you can't expect always to get a good momentum trade, और बहुत बार गैप अप ओपन होने के बाद एक छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड लेके यू हैव टू क्लोज द डे। सो नाउ गोइंग ऑन टू द 5 मिनट्स, इफ वी प्लॉट वॉल्यूम प्रोफाइल तो यहाँ पे वी कैन सी दैट प्राइस ओपन राइट ईयर और यहाँ से एक अग्रेसिव प्राइस मोमेंटम दिखा। आफ्टर दैट प्राइस कंसोलिडेटेड नियर टू 77,500 लेवल और वहां से फिर से एक ब्रेकआउट मोमेंटम दिखी। After that, these prices were not accepted, so price moved down but formed a higher low from here and moved higher. So volumes के हिसाब से I can see huge amount of volumes are seen right here. So this zone has probability to act as a strong support, which is around 77,500 level. And these prices are not accepted at the moment. So price को यहाँ पे consolidate करके it has to move up. So my game plan for tomorrow will be कि let's say price यही कहीं पे open होता है and it starts to move up, तो फिर I will look for a buy side trade going for a breakout near the previous day high. Let's say price gap down भी open होता है तो फिर I will wait for the first 15 minutes and if price starts to move up and it sustains above 77,500 वहाँ पे I will look for a buy side trade going for another consolidation breakout. और flat और gap down opening के लिए my targets will be the previous day high and 78,000 level. Let's say price बड़ा gap up ही open हो गया, 78,000 के आसपास ही gap up open हो गया, तो यहाँ पे I will wait for price to see कि if price moves lower and it takes some support near the previous day high, यहाँ पे on a higher low formation I will look for a buy side trade. और अगर gap up open होने के बाद if it consolidates in the start तो यहाँ पे एक sell side का भी एक scalp trade मिल सकता है till the previous day high. Rather than that gap up open होने के बाद immediately if price starts to move up तो यहाँ पे I won't be interested and I would wait for either the second half or else a resistance to be formed for सेल साइड ट्रेड। लेकिन सेल साइड ट्रेड के लिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज द ओवरऑल मोमेंटम राइट नाउ इज लुकिंग बुलिश। सो सेल साइड का अगर ट्रेड लेना होगा तो यू हैव टू लुक आउट फॉर मल्टीपल कंफर्मेशन, मतलब ए प्लस सेटअप होगा तो ही सेल साइड का ट्रेड लेना, अदरवाइज स्टिक टू बाय ऑन डिप टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज।